Assalamu alaikum, everyone. This is Zainab from DICE Analytics. I would like to welcome you all on behalf of DICE for today's webinar on career transition into software testing and quality assurance. It's my pleasure to announce that today's webinar will be conducted by our lead trainer, Mr. Bilal Mahmood Bhatt. Mr. Bilal is an experienced and well-seasoned information technology professional with over 21 years of experience in the healthcare, edtech, fintech, access control, franchise management, and e-commerce, having a distinct set of skills that make him stand out both on the technical and business side of product. Mr. Bilal has extensive experience in software testing, test management, and quality management. Software testing is a critical function within businesses. In today's session, Mr. Bilal will be giving you all a brief introduction on how to transition your career into software testing and quality assurance domain. According to him, software testing can be challenging but satisfying, requiring you to problem solve, manage risk, and improve quality throughout all phases of software development lifecycle. So do note down your queries during this session because we'll be having a Q&A session at the end. That's all from my side. Over to Mr. Bilal. Assalamu alaikum, everyone. Thank you very much, Zainab, for a very brief introduction. Okay, I think let me move forward without wasting any time. You have already told about myself. My name is Bilal Mahmood Bhatt, serving IT industry for around 21 years now. I've worked in different organizations. I've worked big organizations in Islamabad, a couple of organizations working in sort of a remote model with different international organizations. So I basically would like to tell you about my journey as well, because that is very important for a couple of participants in this session today. That how basically I started, why I have chosen quality control as my career, and was that the first option for me 21 years back, or that was something I planned for my career. So that's a very important, interesting short story. So I basically, back in 2000, I basically started as a developer. For a couple of years, I did development. And then I was basically given an option by my organization that if you move towards quality control, and is it something you think as a career? So I took some time at that time to decide, and I studied about quality control, software testing, and interestingly, I got amused, and I basically opted that as a career at that time. So I will basically tell you guys, I'll keep the communication sort of English and Urdu, so that there are a couple of students in this session as well, so that they easily understand, and I will explain you with my heart that what exactly things which basically motivate me in my career, and what sort of ups and downs were there in my career. And in this session, then I'll give you. I have an agenda for this session as well. That basically starts from a guide for those people, for those newcomers who basically come in IT industry, and they've just finished their studies, or they're just about to finish their studies, and they are basically seeking for a career in the market. So why and how they basically motivate themselves, and how they get prepared to come towards quality assurance, quality control, and what sort of initial help we can provide you to opt this as a career. As well as I've seen the registration. There are a couple of professionals in this session coming in this session today as well. So I have something for them as well, that there are certain myths, there are certain
confusions. There are certain things which basically I learned in my career. I learned in my journey that there are certain mistakes we do. How can we correct those mistakes? How can those things can be improved in different organizations, just to bring quality at the top and increase productivity of the organization. So there are certain things I will be explaining on that as well, and and the last part will be how you can basically you can improve your career in quality control, and how can you take this journey to a level where I, along with a lot of my other colleagues, are these days. So if I'll move forward, so this is basically the brief that why to choose career in software quality assurance. And then there are a couple of fundamentals I'll be explaining to you guys, so that the newcomers or the students we have along, and the people who have just opted quality control as a career, the first part will helpful for them. And then there are certain people who are already in software testing or quality assurance, quality control. So what sort of different type of testing they get involved, and what sort of roles and responsibilities they can opt, which basically I'll talk about the ladders we have in organizations, and then the dependencies we have as a testing or quality control department or other departments. How can that be reduced? So I'll be giving certain tips in this talk as well, that which will basically will be helpful, very helpful for you guys to take certain decisions within while remaining within the software testing profession. So at the end, I will be giving a very brief talk about the way forward. How can the technologies and frameworks, methodologies, and the tools, how can they will be helpful to you to bring improvement in your career, and which basically give you a tremendous learning path to attain a very sort of respectable, reputable level in software testing. So this will be a very brief agenda. I basically wanted to keep it interactive, but because it's a very short session, so I'll be focusing on a couple of things I would like to share, and we can have question and answer sessions. So you heard a lot about quality, fitness for use, conformance to requirement, product or quality of product and services, is the ability to satisfy, ability of the satisfaction of the needs and expectations of the customer. So you heard a lot about these things. So quality is all about that whatever, and remember one thing which is very important. You might learned it in your education as well. There are three things which are very important for a business, and these are the classical comes in classical triangle of project management as well. The first thing is the cost, the second thing is the scope, and the third thing is the time. So these three things always help you to attain quality. So it means आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी आप जो है चीज को अकम्प्लिश करते हैं, you need to always keep an eye on scope. You will always need to keep an eye on the time, and you always need to keep an eye on the cost. इन तीन चीजों को आपने हमेशा नजर में रखना है, and what you will be achieve, you will achieve quality. If you will not take care of these three factors, so quality is what the organization will suffer. So some classical updates that better quality, greater productivity, customer happier, everybody happier. So
another very vague thing about, so I will be discussing some vague and confusions as well. Sometimes people think that increasing quality always reduces productivity. ये एक बहुत बड़ी myth है, ये बहुत बड़ी myth है, because आपको symptom wise लगता ये है, when you invest on the quality, तो आपको लगता है कि आपको cost जो है वो increase होती है, बिकॉज आप क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज होती है, का टाइम इंक्रीज होता है, तो एक मिथ है कि माइट भी प्रोडक्टिविटी उससे रिड्यूस होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक बॉल प्रोड्यूस करते हैं, क्रिकेट प्लेइंग बॉल प्रोड्यूस करते हैं, और वो बॉल जब आपने प्रोड्यूस की और आपने उसके ऊपर स्पेशल चेक्स लगाए कि आपने देखा कि जी कोई भी चीज जो है अकॉर्डिंग टू दी जो रिक्वायरमेंट है उससे वेरिएंस नहीं होना चाहिए, तो आपने कुछ टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड किया उस सारी सिचुएशन के अंदर. लेकिन आप ये देखें कि इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क, तो लेटर ऑन आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना एक्स्ट्रा टाइम आपका बाद में वेस्ट होता है. दैट बेसिकली ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इनटू द सिस्टम, which increase the cost, which bring a lot of impact on the time, और आपका स्कोप क्रीप होता है जिसकी वजह से क्वालिटी सफर करती है. तो इट मींस कि राइट टाइम पे, हम आखिर में आज इसको प्रूव भी करेंगे, राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ जो आपकी एफर्ट्स होती हैं टुवर्ड क्वालिटी, दैट ऑलवेज गिव यू बेनिफिट एंड दैट विल ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, नॉट रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी. ओके, एक और बड़ी मिथ है कि इंस्पेक्शंस with the aim of finding the bad ones and the throwing them out is too late, ineffective and costly. ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि जो है आप जो है चीजों को रॉन्ग पर्सपेक्टिव में थ्रो करें क्वालिटी डिपार्टमेंट्स की तरफ और उनसे एक्सपेक्ट करें कि दे फाइंड आउट द बग्स. ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है. और ये भी एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव एक वे ऑफ कंडक्ट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में ये समझा जाता है कि शायद दे आर देयर टू फाइंड द बग्स. देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, द फर्स्ट थिंग इज आर द रिक्वायरमेंट्स. यू नो द रिक्वायरमेंट्स, design team knows the requirement, the product management team knows the requirement, development team knows the requirement, then there is no question of bugs. Bugs तो आने ही नहीं चाहिए. टेस्टिंग टीम का काम कभी भी नहीं ये नहीं है कि they need to find out the unhidden bugs. उनका काम है just to see, just to evaluate कि things are up to the mark, things are according to the requirement. अब if there are issues, there are non-compliances, there are deviations, it means there are certain teams, they are not doing their job right. Or that basically increases the cost of the products. तो हम later on इस चीज को भी prove करेंगे कि testing team का जो है कतन ये काम नहीं है कि they are the only one to test, but it's a collaborative effort. और ये एक बहुत बड़ी myth है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि which is a wrong doing in all our organizations. Okay, degree to which a system, component or process meets specified requirement. This is basically the quality standards and the customer needs. एक, whatever you thought, whatever the baseline of the requirements you have at the end of the product, at the end of the day, that product basically need to meet those requirements. And उस product को utilize करने के, if there are standards, if that is a product और project में क्या difference होता है, we'll also see that in later slide. फिर there are an end user who basically will be using that product in future. तो वो जो customer है, if he is not be able to use that product, it means that the quality of the product is not up to the mark. So meeting the specific requirements, standards and need of the customer and his expectation, this is very important.
और हम टेस्टर्स का क्या बिलीव होता है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, everything else we test. So we do not take any sort of stance that the things coming towards us is something which do not require any evaluation. हम उसको properly पूरे process के साथ उसको go through करते हैं, उसको evaluate करते हैं, उसको verify करते हैं, उसको validate करते हैं. What is verify, what is validate, वो भी हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे इस सेशन में. मोस्ट कॉमनली सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम्स होती क्या है? इनकरेक्ट कैलकुलेशंस हो सकती हैं, इनकरेक्ट डाटा एडिट्स होते हैं, इनइफेक्टिव डाटा एडिट्स होते हैं, इनकरेक्ट मैचिंग्स होती हैं, मर्जिंग ऑफ डाटा इनकरेक्ट होता है, डाटा सर्चेस गलत होती हैं, व्हाटएवर यू वर बेसिकली लुकिंग फॉर टू कम आउट ऑफ द डाटा सेट, वो आपको सर्च उस तरह से आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही, इनकरेक्ट प्रोसेसिंग है, इनकरेक्ट डाटा रिलेशनशिप्स है, इनकरेक्ट कोडिंग हो गई है, इंप्लीमेंटेशन आपकी इनकरेक्ट हो गई है, बिजनेस रूल आपका इनकरेक्ट इंप्लीमेंट हो गया है, उसका स्ट्रक्चर गलत हो गया है, इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है, आपका जो आपकी जो आपकी डाटा है वो आपको मिसलीड कर रहा है, आपका जो डाटा है वो आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क. सो आपका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज नॉट प्रॉपरली यूजेबल. If everything is fine functionally, it is working very good, but it is not a usable product. Its usability is not good. So then again, the adaptation of the product जो है it always suffers. What is adaptation of product? उसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा. Then sometimes जो desired automation होती है that get obsolete. That is not something which is required now. Inconsistent processing है आपकी, unreliable results हैं, performance आपकी unreliable है, incorrect, inadequate interfaces हैं आपके. Then there are systems जिनकी security के issues हैं, incorrect file handling है. So these are all different options which basically testers and quality control people, they find it out in applications to resolve all those shortcomings are there in those products. Objectives क्या होते हैं टेस्टिंग के? Executing a program with an intent of finding an error. कि अगर कोई चीज error क्या हो सकता है कि which is non-compliant to the requirement, which is non-compliant to the standards, which is non-compliant to the what exactly customer desires. अगर उसके साथ contrary है, so that is basically something you can call an error. To check if the system meets the requirement and be executed successfully in the intended environment. So that is basically one of the important job of the testers. To check if the system is fit for the purpose. जिस purpose के लिए आपने उसको create किया है, जिस purpose के लिए client ने उसको आपसे demand किया है, वो purpose जो है fulfill हो रहा है कि नहीं हो रहा. To check if the system does what it expected to do, intended to do, वो कर रहा है या नहीं कर रहा. That is basically the job of the testers. Then there are different ways to find all those things. Like sometimes the testers create test cases, scenarios, जिनसे आप वो सारी चीजें मैच करते हैं कि what exactly your system it is doing and what it intend to do. तो उसके कंपैरिजन में वो आप सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं. फिर a successful test is one that uncovers वो undisclosed जो आपके एरर्स हैं उनको जो है अनकवर करे, ताकि आपके जो टेस्ट केसेस हैं वो तमाम शॉर्टकमिंग्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर सके. Then a good test is not redundant. Definitely आपको जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टिप ऑफ द डे मैं आपको दूंगा कि एक सबसे बड़ी जो एक मिथ है कि व्हाट टू टेस्ट एंड व्हाट नॉट टू टेस्ट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हर चीज को टेस्ट नहीं किया जाता. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू बेसिकली नीड टू रूल आउट दैट
थिंग्स कैन नॉट बी टेस्टेड, या इनको हमने टेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपकी टेस्टिंग जो होती है एक टाइम बाउंड चीज होती है. अगर आप हर चीज को इनफाइनाइट टेस्ट करेंगे तो आपका जो टाइम है, जो एक फैक्टर हमने शुरू में हमने 3 फैक्टर जो डिस्कस किए थे उनमें से एक टाइम है, तो टाइम बाउंड नहीं होंगे तो यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल टेस्टर. इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने टेस्ट केसेस या सिनेरियोज में से रिडंडेंसी को रिमूव करना है, और इसके लिए आपको साइंटिफिक टेक्निक्स सीखनी है. ठीक है, आपको ईसीपी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, आपको डिसीजन टेबल्स की तरफ जाना है व्हाइल क्रिएटिंग योर टेस्ट केसेस. अदरवाइज आपकी जो टेस्ट केसेस हैं वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, या देयर आर सो मेनी टेस्ट केसेस जो आप रिडंडेंट टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, और देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस जो आप मिस कर देंगे. तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक है फॉर टेस्टर टू सी कि व्हाट टू टेस्ट एंड व्हाट नॉट टू टेस्ट. अ गुड टेस्ट केस शुड बी बेस्ट ऑफ ब्रीड, यानी कि आपने अपनी जो सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस है उसके अंदर बड़ा आपने एक इंपॉर्टेंट रोल जो है उसको प्ले करना है. देन आपने अपने टेस्ट केस की जो स्ट्रक्चरिंग है उसको बड़ा अच्छा करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और उनको आपने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ब्रेक डाउन करना है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फाइंड अ बग एज अर्ली एज पॉसिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और टेस्टिंग में सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक और बड़ी मिथ है, टेस्टिंग जो है बेसिकली एक फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, और जो एक लेटर स्टेज में आता है. ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है. If your testers are not involved from very beginning of the project, beginning of the project क्या होती है? When an idea comes in the mind of the business team, when an idea comes in the mind of a customer, at that particular time, at that particular level, आपको अपने testers को involve करना है. If they are not involved from that level, तो आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वेस्टेजेस आपके सिस्टम के अंदर आ जाती है, एंड देन इट आल्सो बिकम जॉब ऑफ दोस क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल पीपल टू एलिमिनेट दोस वेस्टेजेस. तो अब आपके पास 2 अप्रोचेस होती हैं. द फर्स्ट अप्रोच इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज अ रिएक्टिव अप्रोच. द प्रोएक्टिव अप्रोच क्या हो सकती है? यू बेसिकली विद द हेल्प ऑफ your quality assurance people avoid all those unnecessary things to come towards your system. Second, कि आप उनको involve नहीं करें, those wastages come, and then later on your quality department removes all those wastages. So I would always suggest to be a proactive approach, कि आपकी जो testing team है, आपकी जो quality assurance team है, they must be part of all the initial phases of the software development life cycle as well. बेशक वो एक आइडिया जनरेशन है, बेशक वो एक डिजाइन हाई लेवल प्लानिंग है, जो आपका क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट, सो दैट वो जो वेस्टेजेस है दोस विल नॉट कम टुवर्ड्स द सिस्टम. So that is also very important. So verification and validation. If I'll start from the validation is all those things which your testers are doing. Typical involves actual testing, takes place after verification are completed. So these are all those steps जिसमें आप पूरा टेस्ट प्लान करते हैं, जिसमें आपकी टेस्ट स्ट्रेटजी होती है, टेस्ट प्लानिंग होती है, फिर आपकी टेस्ट एक डेफिनेशन होती है, टेस्ट एग्जीक्यूशन होती है, फिर आपकी टेस्ट जो है उसकी ऑडिटिंग होती है, और फिर आपके साइन ऑफ्स होते हैं. दिस इज वैलिडेशन. बट वेरिफिकेशन इज अ prior sort of steps, typically involves reviews, meetings to evaluate documents, plans, code requirements, specifications. So these are basically setting up a complete procedure, a complete process to conduct the testing. So ये दोनों चीजें जो है validation and verification, that basically give you a complete authenticity that एक जो quality of the product है या software है
that is intact. So these both these two things are very important basically to cover the quality. टिप ऑफ द डे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे साथ कुछ सीनियर लोग भी हैं या कुछ ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज गिव अ टिप to every resource that you basically need to keep three things parallel. आपने इन तीन verticals को लेकर चलना है. The first vertical is SDLC, software development lifecycle, software testing lifecycle. You need to know about this. This vertical you need to have a grip on that. Second, the development methodologies used in different organizations. आपको एक पूरा आइडिया होना चाहिए whether you are following agile, whether you are following waterfall, spiral, क्या मॉडल है, क्या methodology है जो आपकी organization follow कर रही है. And the third thing is the project management life cycle, project management phases. This is the third vertical. And the intersection, the horizontals between these three verticals are very important to understand. Like initiation of the project में SDLC में क्या हो रहा है, development methodology क्या कहती है. Then the next phase planning में आपकी SDLC क्या कहती है, आपकी development methodology क्या कहती है. If you are following agile or following Scrum as a framework, वो क्या कहता है. Then if you are in execution, you are in monitoring and control, you are at closure. So these three verticals must be understandable for every professional. इसके बगैर it's very difficult to work in market, in an organization, especially कि जब आप अपने career में grow करते हैं from an engineer to senior engineer to a tech lead to a principal engineer to a team lead to a manager to a senior manager to a strategist to a director. This is very important कि आप इन तीन verticals को अच्छी तरह समझते हैं. Okay. To work in any functional department. So quality assurance is basically a functional department. And I will not go into details of what is quality assurance, what is quality control, because that's another big debate. I will not go into that. So I will remain focused on quality control and software testing in this session. So whatever department you're working, you need to plan something and then you need to do something. You must have good checkpoints and then you need to have actions for that. So this is basically a base of running any functional department. बेशक वो एक testing department है, बेशक वो एक design department है, बेशक वो एक DevOps department है, बेशक एक development department है. So you need to, if you are in a position to run the department, तो आपको basically इन तमाम areas में काम करना पड़ेगा. Then I'll keep on just skipping a couple of things. So एक प्रिवेंशन कॉस्ट होती है, एक अप्रेजल कॉस्ट होती है. आपको ये चूज करना है कि आर यू अ प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन और यू आर रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स करते हैं बिफोर गोइंग इनटू एक्चुअल हैपनिंग, अगर आप प्रॉपर स्पेंड करते हैं, एक अच्छा प्रोसेस एस्टेब्लिश करते हैं, उसके ऊपर कॉस्ट लाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, राइट पीपल फॉर राइट जॉब, राइट टूल, and then good planning. So this is your preventive cost. Appraisal cost is something कि आप जब कोई चीज जो है बनाते वक्त उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो करते हैं. तो अगर आप प्रिवेंटिव कॉस्ट को अप्लाई करेंगे आप अपने डिपार्टमेंट में, तो आपको अप्रेजल कॉस्ट को रिड्यूस हो जाएगी ऑटोमेटिकली. और अगर आप इन दोनों पे फोकस नहीं करेंगे तो फेलियर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द डेंजरस थिंग. एंड स्पेशली यहाँ पे जो मैं आपको एक टिप दूंगा वो ये है कि ये जो फेलियर कॉस्ट है, दैट ऑलवेज गिव अ बिग सॉर्ट ऑफ जो है एक डिस्ट्रक्टिव इमेज टू द टेस्टिंग टीम, टू द क्वालिटी कंट्रोल टीम, कि अगर आपकी फेलियर कॉस्ट आती है, मीन कि you got a lot of feedback from the customers after going into the production, you got a lot of incidents from the clients,
in terms of support request from them. So ये सारे का सारा जो प्रेशर है ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे आता है, तो आपको उसको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। आपको इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो पहले दो सिचुएशंस होती हैं उनमें प्रॉपरली काम करना पड़ता है ताकि आप इस सिचुएशन से को अवॉइड कर सकें। Then quality assurance is basically more towards systematic planning, processes establishing in the organization. So it's more towards proactive approaches. Quality control is something more concentric on the product or on verification of that product. This is basically quality control is more towards software testing. So again, quality assurance में processes आप वो सारे अपने चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश करते हैं, अपने ऑडिट्स को एस्टैब्लिश करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में आप फोकस करते हैं अपने जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस की तरफ, आप अपने टेस्ट केसेस और इन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो इस तरह से क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल व्हिच इज बेसिकली कम्स अंडर द कंप्लीट अम्ब्रेला ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। Requirement specification and analysis is again one of the very important part. This is again a very proactive approach कि आपका जो focus है being a test department, being a tester, आपका focus जो है वो towards requirements analysis की तरफ होना चाहिए। requirement analysis में भी दो चीजें बड़ी important है, एक तो जो user specific requirements है तो ये आपको तब पता होंगी when testing team, when your quality control team is part of all those talks with the clients. अगर आप उन तमाम चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो you will always be getting a second hand knowledge. And then software requirement specification. This is basically an agreed upon requirements between the two organizations, the one who's basically your customer and the second the vendor who's basically establishing the product. So इन दोनों चीजों को आपने हमेशा first hand knowledge के साथ understand करना है rather than कि someone else basically और at least आपकी जो डिपार्टमेंट के हेड है या आपकी डिपार्टमेंट के जो टॉप टियर है, they must get this knowledge first hand so that there is a confidence of getting the knowledge first hand rather than getting it from some other teams who are in-house team. Like any other department, it's very important for quality control department for project staffing, planning, and scheduling. This is not something that these are only things done in cross-function teams or project teams. It is very important to do all these things in functional teams as well. Like software testing team जो है, that is also very important as a professional, as a part of testing team, that someone as a senior team lead in software testing department, they must know these techniques. So I'll basically skip a couple of these things and I'll okay. Another very important thing is while planning some stuff, so the testing team or quality control team, they don't focus towards risk management. This is also very important, that certain times you need to basically give claims कि आप ये आपका claim है, तो risk identification is very important. You need to identify the risk. आपको उसको plan करना चाहिए और फिर उसको monitor करना चाहिए so that risk can be mitigated during the execution. So this is basically a sort of a small risk register जो test department को भी बनाना चाहिए. Configuration management जो है, DevOps का जो process है, I've seen this is again a tip. Most of the time I've seen कि जो testing department है, quality control department है, उनका दूर तक configuration management या DevOps का exposure नहीं होता. They have no idea how to manage the code. So this is again a big sort of gap for the department and for the resources. I would always recommend all testing resources to learn DevOps. They must know a bit about configuration management, because whenever you test, आप एक environment में test करते हैं. You never test in development environment. You always demand for a full-fledged testing environment.
उस टेस्टिंग एनवायरनमेंट का कंट्रोल टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास तब आता है जब दे नो अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. Otherwise, if there is no DevOps process in the organization, sometimes it's very difficult. Testing team is finding out issues, but after some minutes, they came to know there is no issue. It's very hard to reproduce issues because everybody has access on the code. So these are again very sort of difficult situations in organization. So being a quality assurance expert, not only the software tester, this is very important for that resource to establish these different required departments as well. तो आपका being a quality assurance representative, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये जितने भी important aspects हैं organization में उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश ऑल दोस. अदरवाइज देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज व्हिच बेसिकली द टेस्टिंग टीम विल फेस. ओके, चेंज मैनेजमेंट अगेन अ बिग चैलेंज फॉर द टेस्टिंग डिपार्टमेंट कि थिंग्स गेट क्रीप, फीचर क्रीपिंग होती है, क्लाइंट कम अप विद अ लॉट ऑफ feedback. Again, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि if you are not good at initial stage, later on so many things come towards you. अगर आप पहले अच्छी cost initially अपनी वो कर लेंगे तो आपको later stages में feedback और ये challenges कम होते जाएंगे. Change management को control करना अपने artifacts के अंदर, test case management के अंदर, अपनी test planning के अंदर, this is again very important. Or if the people who are with us are senior in testing departments, this is a very challenging thing for them. और इसको पूरा learn करना, इस art को सीखना is very important. Learning about the RTM, requirement traceability metrics, is very important. How they basically gauge it, align it with your requirements and your test case, the complete suite you have. So this is again a very important thing to learn. We have already talked about version controls, and then definitely if we will not be focusing on all these preactive things, so maintenance or support के अंदर there are so many things coming from the clients, और वो challenge create होता है later on stage में, so many incidents coming from the client, or that all pressure comes towards the testing team. एक बड़ी important चीज जो है वो levels of testing है. बेसिकली लेवल्स का मतलब होता है कि स्टेजेस क्या है. आप टेस्टिंग जो है इसमें यूजुअली जो है ये 4 लेवल्स यूज किए जाते हैं कि फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग का कौन सा होगा, यूनिट लेवल पे टेस्ट किया जाए, सेकंड इंटीग्रेशन लेवल पे, थर्ड सिस्टम लेवल पे, और फोर्थ एक्सेप्टेंस लेवल पे. अब इंटरेस्टिंगली अगर हम यूनिट लेवल को देखें तो यूनिट लेवल इज बेसिकली इट्स अ वेरी माइक्रो लेवल. दिस इज मेनली हमारा यहाँ पे डिस्कशन यूनिट टेस्टिंग को एक्सप्लेन करना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये देखना है कि दिस लेवल डू नॉट बिलोंग्स टू द टेस्टर मेनली. अगर ये टेस्टिंग नहीं होती तो ये जो प्रेशर है ये भी टेस्टिंग टीम के ऊपर आता है. तो बीइंग अ क्वालिटी एश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर ड्यूटी टू फोर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि यूनिट टेस्टिंग का जो लेवल है, this layer need to be added. Second, integration. Again, integration test जो होता है, इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि ये होता क्या है. This is also not a primary job of a tester to do. इसमें basically programmers और जो आपके कोडर्स होते हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं और उनकी लीडरशिप इन्वॉल्व होती है. अगेन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये लेयर और ये स्टेज भी मिसिंग है तो इसका सारा प्रेशर भी अगेन पाइल अप होते होते यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सारे का सारा प्रेशर कहाँ जाता है, इस थर्ड लेयर पे, सिस्टम टेस्टिंग. दिस इज बेसिकली द कोर जॉब ऑफ अ टेस्टर, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट. और अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले 2 लेवल्स एब्सेंट होते हैं तो सारा प्रेशर आपका जो है इस नेक्स्ट लेवल पे आता है. तो जस्ट आपको यहाँ बताने का पर्पस ये है कि आपको बीइंग अ क्वालिटी एश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव आपको वो पहले 2 लेवल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस करवाना है, उनको आपने एनेबल करवाना है. अदरवाइज
जो सबसे बड़ा गैप आता है कि वो जो लॉट्स ऑफ बग्स कमिंग टुवर्ड्स टेस्टिंग टीम और वो बग्स फाइंड करते रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. देन डेफिनेटली प्रोडक्शन से पहले जब आपने यूजर को आपने इन्वॉल्व करना है, उसको आपने एक्सेप्टेंस टेस्ट करवाना है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं. वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दोस टाइप्स. ओके, सो टेस्टिंग में बेसिकली डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं. आज का हमारा फोकस थोड़ा सा जो है वो सिर्फ इनका एक ओवरव्यू की तरफ होगा कि ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, इंक्रीमेंटल, थ्रेट टेस्टिंग. हम ओवरऑल इनको थोड़ा सा देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में यूजुअली जो है इट्स अनस्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग, जिसमें आप जो है फंक्शंस और जो फंक्शनल आपकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी एप्लीकेशन के, उस पर फोकस्ड होते हैं. यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चरल, आप उसके कोड और स्ट्रक्चर की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होते. आप ये देखते हैं कि वो आपके लिए एक ब्लैक बॉक्स होता है जो कोड है, और आपका सारा फोकस जो है वो आपके जो है आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है. तो दैट इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्ट. यूजुअली जो हमारे टेस्टर्स जो है वो ब्लैक बॉक्स कर रहे होते हैं. जो व्हाइट बॉक्स टेस्ट होता है ये स्ट्रक्चरल टेस्टिंग होती है, जिसमें आप कोड और आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी कोड की क्वालिटी, आपकी कोड, आपका जो स्ट्रक्चर्स है, आपके जो लूप्स है, आप एक एक चीज को और उसकी जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, एक एक चीज को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि पाथ ठीक है, आपकी ब्रांचिंग ठीक है, आपकी जो है फंक्शन कंडीशंस आपने ठीक लगाई हुई है, स्टेटमेंट्स आपकी सारी करेक्ट है. और फिर समटाइम्स देयर आर एनवायरनमेंट्स जहाँ पे आपको ग्रे बॉक्स टेस्ट करना पड़ता है. आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक हाइब्रिड टेस्टिंग होती है बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स. ओके, इसमें मैं कुछ चीजें स्किप करूंगा. और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए होती है सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें आप अपने एंड यूजर की एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, जिसमें आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो पूरी स्पेसिफिकेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उस एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. और फिर आप चाहते हैं अपनी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की तरफ, जिसमें आप उसकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन उसमें यूजुअली आप अपने क्लाइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के रेप्लिकास बनाते हैं और क्लाइंट को इन्वॉल्व करके आप अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं. ओके, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जो आप अपनी पूरी लाइफ साइकिल में कर रहे होते हैं. और उसमें जो आपकी ब्लैक बॉक्स पे आपका जो ज्यादा फोकस होता है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल की तरफ होता है. फंक्शनल में आप अपनी एप्लीकेशंस के जितने भी फीचर्स हैं, आपकी एप्लीकेशंस के जितने भी जो है फंक्शनल उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर ज्यादा फोकस है. नॉन फंक्शनल में जो एक बड़ी आप टेस्टिंग करते हैं उसमें आपका जो फोकस होता है टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन होता है, आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन होती है. और दूसरा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपका जो है यूजेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन होती है कि वेदर दैट इज अ यूजेबल थिंग और नॉट, यूजर फ्रेंडलीनेस है, इजी टू यूज है, वो एक बहुत बड़ा आपका फोकस होता है. मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस में समटाइम्स यू नीड टू परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग एज वेल, जिसमें आप एप्लीकेशन को जो है विदाउट एनी प्रॉपर प्लान आप उसको टेस्ट करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स जो है वो उस पर गो थ्रू करते हैं. दे कीप ऑन फाइंडिंग डिफरेंट इश्यूज इन योर एप्लीकेशन. अल्फा बीटा टेस्टिंग जो है, these are again acceptance testing के पार्ट है. I will not go into details of that. यूजुअली ये जो है आपके प्रोडक्ट को प्रोडक्शन पे ले जाने से पहले जो है यू इन्वॉल्व योर क्लाइंट्स, और उसमें आपकी पूरी जो है एक टीम है जिसमें फर्स्ट स्टेज में आप अल्फा टेस्ट करते हैं, एंड देन जिसमें आपकी अपनी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है और कंट्रोल आपके पास होता है. लेटर ऑन आप बीटा टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसमें आप क्लाइंट को जो है ज्यादा वो फोकस ज्यादा क्लाइंट की तरफ होता है टेस्टिंग में. ओके, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. जो हमने शुरू में भी बात की कि रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करना, फिर जो है टेस्ट केस को क्रिएट करना. और टेस्ट केस में मैंने आपको बोला है कि टेस्ट केस में जो साइंटिफिक मेथड्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा जो मैंने आपको पहले टिप भी दी है,
what not to test is also very important. Sometimes 80% you need to decide this has not to be tested, and 20% need to be tested, because you need to make yourself time bound. अगर अदरवाइज आप अपने आप को टाइम बाउंड नहीं करेंगे तो यू विल बी डूइंग वो जो हमने रिटेंडेंसी है ऑफ द टेस्ट केसेस, आप डुप्लीकेशन जो है उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, और बहुत से इंपॉर्टेंट आप एस्पेक्ट्स को मिस कर देते हैं। और फिर अपने टेस्ट को टेस्टिंग पूरी लाइफ साइकिल को एग्जीक्यूट करना, उसको क्लोजर्स की तरफ लेके जाना, इन तमाम फेजेस में देयर आर डिफरेंट डिटेल्स जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है, और फिर आप अपने पूरे प्रोसेस को एनालाइज करते हैं और इस पूरे साइकिल को आप रिपीट करते रहते हैं, सो दैट यू ब्रिंग अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन योर सिचुएशन। तो इसको थोड़ा सा मैं चीजों को इनको स्किप करूंगा और आई मूव टुवर्ड्स अ टेस्ट प्लान। सो इस कंप्लीट पूरी आपकी जो जर्नी है टेस्टिंग की, जो लाइफ साइकिल है, इसको आपको पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान करना है। इसमें भी एक लेटर ऑन मैं आपको एक चीज डिस्कस करूंगा कि जो हमारे कन्वेंशनल मेथड्स होते थे उसमें हम बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशंस करते थे, और जो आज हम लीन मेथड्स यूज करते हैं उसमें बहुत ही लेस हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो वी एक्चुअली नीड टू ब्रिंग आवरसेल्व्स समवेयर इन बिटवीन, और ये एक डिपार्टमेंट का एक डिसीजन होता है कि हमें किस लेवल पे हमें जो है डेवलपमेंट। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वाटरफॉल मेथड्स वर्सेस एजाइल मेथोडोलॉजीज, कि हमने ये डिसाइड करना है कि किस लेवल पे हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो एजाइल डू नॉट से कि आपने बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी, तो यू बेसिकली नीड टू क्रिएट वेरी फ्रटाइल, वेरी थिन डॉक्यूमेंट्स, बट those are very important to create, otherwise there are so many important things जो आप basically miss करते हैं। So this is basically what was desired earlier, कि जिसमें हम बड़ी एक डिटेल डॉक्यूमेंट करते थे टेस्ट प्लान्स के लिए। टिप ऑफ द डे यहाँ पे क्या मैं आपको दूंगा कि यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज। बाज औकात हम ये एक मिस्टेक करते हैं कि वी बेसिकली एज अ टीम, एज अ टेस्टिंग टीम, एज अ क्वालिटी कंट्रोल टीम, हम क्या करते हैं, वी बेसिकली डिप्लॉय एवरी रिसोर्स ऑन एवरीथिंग। समटाइम्स इट इज नॉट नेसेसरी टू डू दैट। आप हर बंदे से हर काम कराने की कोशिश करते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर गुड इन strategy building, they are good in planning. There are certain people who are good in requirement analysis, test case definition. There are certain people who are good in management of the test cases, execution of the test cases. There are certain people who are good in test audits, peer reviews. तो आपको बाज औकात इस तरह के डिसीजन भी करने पड़ते हैं विद इन द टीम, या आपको अपने कैरियर के लिए बाज औकात इनमें से कुछ चीजों में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है कि if you're not good in sort of writing test case, तो why not to go into test case execution? तो एक आपकी टीम का मेंबर जो है वो टेस्ट केस राइटिंग में अच्छा है, he can write the test cases, other can execute it. तो इस तरह की सारी सिचुएशन में भी वो आपको होना है। और फिर दूसरी टिप जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, if you avoid unit, if your organization is avoiding unit testing, if your organization is avoiding integration testing, the pressure will come towards system testing, acceptance testing, and then the huge amount of customer feedback will come towards it. So this is very important to focus on the first two part of testing as levels as well. Otherwise, आपकी organization में हमेशा things will be thrown towards quality control department and they will be always challenged. Okay. Again, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप मैं आपको जो हमने ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में चीज डिस्कस की है, आई विल गिव यू कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स दे आर बेसिकली डिपेंडेंट डिपार्टमेंट। तो उनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, दे नीड टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। दे नीड टू बी ऑटोनोमस, लाइक सम टाइम जो उनको गाइडलाइंस है वो डेवलपमेंट टीम दे रही होती है। दैट इज अगेन अ वेरी बिग मिस्टेक इन ऑर्गेनाइजेशंस। सो दे बेसिकली नीड टू हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बिजनेस टीम, विद द प्रोडक्ट ओनर्स,
or first-hand knowledge is very important, or some of the representatives of the quality control. So as a quality control professional, this is your job to learn all these things, that you need to interact with the business team, you need to talk to the business product owners, you need to talk to the business product managers, you need to talk to the business team. आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है ताकि आपको ये सारी चीजें फर्स्ट हैंड नॉलेज में मिले. देन यू कैन सी द इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट विद इन योर टीम. और फिर वर्क को जो ब्रेक डाउन करना है, एपिक्स को फीचर्स में डिवाइड करना, फीचर्स को यूजर स्टोरीज में डिवाइड करना, यूजर स्टोरीज को टास्क में डिवाइड करना, दिस बेसिकली art need to be learned as a testing individual by yourself. Estimation is again a very important thing, which basically sometimes testing resources are not aware of. They don't know what are the different techniques of estimation. They are mostly dependent on the development team. Again, it's a big mistake. It's a big lacking. Proper testing time नहीं मिलना एक आइटरेशन के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज है. तो प्लानिंग पर्सपेक्टिव से भी यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट, यू नीड टू बी वेरी कंट्रोल्ड, यू नीड टू बी वेरी अलाइन विद योर पीएमओ, दैट what sort of time has been given to the testing team, और उस proper time को utilize करना, proper sign-offs का होना from the development team, from the design team, from the product owners and from the testing team is very important. ये चीजें जो है ये lack ना करती हो किसी भी environment के अंदर. Bug life cycle is again very important, और उसका जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें, जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक एक्टिविटी है जो यूजुअली परफॉर्म नहीं की जाती ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द बग ट्रियाज. That is very important to conduct triage meetings within the teams, within the cross-functional teams as well as the functional teams, so that आप ये देखें कि आपका जो ट्रेंड है, आपका जो बग प्रोडक्शन रेशियो है, वो हर रिसोर्स का क्या है, whether how many bugs he is producing, correct, कितने गलत bugs वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितने उसके bugs हैं जो कमिट हो रहे हैं, कितने bugs हैं जो वो उसके जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं. रिजेक्शन और कमिटमेंट रेट जो है, इसको अंडरस्टैंड करना और फिर प्रॉपरली bugs को टैगिंग करना with the priority and severity is very important for a department's productivity. These are a couple of things I'm just eliminating, and I'm just so again एक last जो मैं 2-3 मिनट आपके लूंगा, वो मैं लूंगा agile testing principles के ऊपर. देखिए, if in an organization we are claiming that we are following agile, we are basically on Scrum, तो हमारी testing और हमारी जो quality control department, why they are not on agile? I've seen 99% the testing department is doing conventional testing in agile environment, which is a wrong thing. So we as a resource, as a quality control source, need to learn what agile testing principles are. ठीक है, हमें सीखना है कि testing moves the project forward. This is very important. ये नहीं हो सकता कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्प्रिंट आपकी खत्म हो रही है without completion of the testing. This is a wrong thing. So testing is not a phase. Testing in agile is not a phase. It's basically part of the development. This is very important. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो you are not following Scrum. Not just the designated testers. Everybody need to test. वो जो मैंने आपको लेवल्स मिसिंग बताए हैं, जो इंटीग्रेशन और यूनिट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, हम वी कैन नॉट सर्वाइव इन स्क्रम. मोस्ट ऑफ यू जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, और जो लोग इंडस्ट्री के हैं उनको ये चीज रियलाइज होती होगी कि टेस्टिंग का टाइम हमेशा कम होता है विद इन अ स्प्रिंट. दिस इज द रीजन. ये सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी टेस्टिंग एजाइल नहीं है. और टेस्टिंग एजाइल सिर्फ टेस्टिंग टीम का काम नहीं है, इट्स द कंप्लीट टास्क ऑफ द टीम, जो पूरी टीम इंक्लूडिंग देयर स्क्रम मास्टर, इट्स द कंप्लीट जॉब. रिड्यूस फीडबैक लेटेंसी. ये नहीं हो सकता कि आप एक स्प्रिंट में बग्स आपके आते हैं और फिर आप उसको अगली स्प्रिंट में नहीं. टेस्ट अर्ली
and उनको resolve early. Test represents expectations. Definitely जब testers चीज को review करते हैं, explorate करते हैं, तो there are feedback आती है. उसको कैसे manage करना है, that is very important. And product owner's role is very important with that. Bugs don't hang around. You need to resolve them quickly. Reduce test documentation. Already हम इस पे बात कर चुके हैं. Test is part of the den. ये नहीं हो सकता कि you say I'm done, but testing is still left. No, it's a wrong approach. And then test last to test-driven approach. You are not doing the testing at the last, but you're doing the testing at the beginning. So, इसमें जो concept of test-driven development, it's very important. And the last slide from my side is basically agile concrete practices need to be followed. You need to go for unit tests, you need to go for integration, you need to go for automation to reduce the time within an iteration. Test-driven development is very important. Again, आपका paper open है कि you already know the development team that what tester is going to test. तो पहले से चीजें आपने उनको बताई हुई है. Acceptance test-driven development कि आपको पता है client ने क्या review करना है, पहले से वो सारी चीजें आपने वो की हुई है. Exploratory testing is important in this situation. Then हमने version control के ऊपर काफी बात की है. And collaboration testing mean कि everybody is testing. It's not only the job of testing team only कि वो इसको test करें. और अगर हम situation ये नहीं करेंगे तो wished I had understand that cost of quality stuff better. अगर आप नहीं करेंगे तो at the end you will be synced and this all pressure come towards from the client towards the testing. Okay, so I would like you guys to be interactive. So if anybody have any question, it was a very short time, so I actually tried to cover a couple of important things. So I think from my side, the forum is open. If anybody has any question, please just introduce yourself, ask that question, and I would love to answer your questions. Hello, Assalamu alaikum, Bilal bhai. Walaikum salam. Bilal bhai, myself Ghayur Ahmed. And question तो नहीं है, लेकिन बस एक आपने एक बात की थी कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की आपने बात की थी कि जो उसके स्टैंडर्ड्स की आपने बात की थी कि डेवऑप्स का जो नॉलेज है वो होना बहुत जरूरी है टेस्टर के लिए. जी, मैं आपको एक क्लासिकल जो है ना आपको एक फाइट बताता हूँ कि मैंने एग्जांपल भी साथ दी थी कि समटाइम्स टेस्टर रिपोर्ट्स अ बग एंड व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू रिप्रोड्यूस दैट एंड ही वाज अनएबल टू रिप्रोड्यूस दैट. ये बहुत दफा होता है बिकॉज जो आपकी एनवायरनमेंट है जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं दैट नीड टू बी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. इफ दैट इज नॉट अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड योर डेवलपमेंट टीम कीप ऑन updating that environment, that brings a lot of challenges. And sometimes एक testing का जो एक resource होता है, he have no idea what is DevOps. So that is a very difficult thing to compete at that time with the development team because they are well aware of the DevOps process. They are well aware of configuration process. तो इसलिए टेस्टिंग टीम को बिकॉज जो एनवायरमेंट्स होती है लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आपकी टेस्टिंग एनवायरनमेंट, आपकी स्टेजिंग एनवायरनमेंट, आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इनका कस्टोडियन जो है अगर वो डेवऑप्स डिपार्टमेंट है तो टेस्टिंग के साथ फिर वो एक कोलैबोरेट कर सकता है रादर देन कि यू आर डिपेंडेंट ऑन द डेवलपमेंट टीम. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. जी ठीक हो गया बिलाल भाई. ओके, थैंक यू. Sir, we have a question in the comment in the chat section from Mr. Rehan Khan. He's asking about the course. What is the prerequisites required to take this course? Also, what level of programming knowledge is required to become a successful QA software engineer? It's a very important question. A very important question. That's another myth. I think people think that you don't require development sort of or coding expertise to become a tester. There is a yes and there is a no. If you are a manual tester, still you need to test the code. ना आपको टेस्ट तो अपने कोड ही करना है ना, आपको फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है. तो व्हेन यू फाइंड एन इशू तो आपको एग्जैक्टली पीछे क्लिक करता है कि व्हाट मिस्टेक द डेवलपर हैव डन.
तो आपका एक जो इंट्यूशन होती है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. देन ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो जिक्र ये अगर ये कर रहे हैं तो वो बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग इज अ कंप्लीट अलग अलग पैराडाइम है. वो एक बिल्कुल अलग चीज है. और हम जो हमारा अपकमिंग कोर्स है उसमें हम उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि वो क्या कंफ्यूजन है कि जिसमें हम समझते हैं कि शायद मैनुअल टेस्टिंग जो है ना वो ओवरकम हो जाएगी ऑटोमेशन टेस्टिंग थिंग. दीज आर बिग मिथ्स. बिल्कुल ये अलग मिथ्स है. आपको एक मैनुअल टेस्टर होने के लिए आपका अच्छा कोडिंग नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपका कोडिंग नॉलेज मैंडेटरी नहीं है इसके लिए. लेकिन ऑटोमेशन जो है उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपका मैनुअल टेस्टिंग की एक्सपर्टीज. इफ समवन हैज नो आइडिया for the boundary value analysis, he has no idea of ECP, he has no idea decision tables, he has no idea of state transitions, तो he might do the automation testing. But लेकिन वो एक मैनुअल टेस्टर अच्छा नहीं बन सकता अगर उसको उन सारी चीजों का आइडिया नहीं है. Okay. Right. Any other question? Hi, so I have a question. In this course, do we learn the manual testing or automatic or both of them? Okay, so we've already shared the content. So we will be focusing on quality assurance manual testing mainly 80%, and then we'll move towards agile testing as well. And later on लास्ट पार्ट जो होगा उस पर हम फोकस करेंगे ऑटोमेशन के ऊपर, और उसमें हम परफॉर्मेंस और फंक्शनल ऑटोमेशन के ऊपर जो है हम बात करेंगे. लेकिन जो फंक्शनल और परफॉर्मेंस ऑटोमेशन है दैट इज बेसिकली आर सेपरेट कोर्सेज. हम कुछ एडवांस कोर्सेज भी प्लान कर रहे हैं जिसमें हम टोटल फोकस ही प्रोफेशनल्स के लिए करेंगे और ऑटोमेशन के लिए करेंगे. लेकिन इसमें जो है आपको एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए टेस्टिंग में, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो हाउ टू गेट अ गुड जॉब इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सो दैट विल बी आवर मोटिव. मेन मोटिव हमारा होगा. तो हमारा 20% फोकस ऑटोमेशन पे होगा, 80% फोकस हमारा जो है वो ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस पे होगा. Okay, and after this course, you will offer an advanced course in the software testing. Exactly, you're right. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम. बिलाल भाई, मैं अभी एक बूट कैंप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे इशू ये आ रहा है कि आप मुझे गाइड करें कि मैं एक फ्रेश ग्रेजुएट को कैसे क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर ट्रेन करूँ. मैं एग्जांपल आज की आपको दे देता हूँ. मैंने एपीआई टेस्टिंग से टॉपिक स्टार्ट किया था और आफ्टर 20 मिनट्स उन लोगों ने मुझे कहा हमें एपीआईज का नहीं पता, हालांकि वो फ्रेश ग्रेजुएट थे. तो आप काइंडली मुझे सजेस्ट करें कि मैं डीप रूट पे कैसे उनको ट्रेन करूं. आई थिंक ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. जब भी हम किसी भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आई हैव बीन बेसिकली अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर एज वेल इन यूनिवर्सिटीज. तो ये बड़ा आपका एक क्लासिकल वो है कि आपने यूनिवर्सिटीज में भी अक्सर देखा होगा कि प्री रेक्विजिट्स जो है वो बताए जाते हैं कि किसी भी कोर्स के लिए क्या प्री रेक्विजिट्स हैं. अगर वो प्री रेक्विजिट्स आपने अच्छी तरीके से विजिबल किए हैं और आपने बताए हैं कि दीज आर द प्री रेक्विजिट्स, विदाउट देम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप ये कोर्स कर सकेंगे, और वो लोग अगर उसके बावजूद उसमें आते हैं तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मिस्टेक. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप उनको पहले ना उसको स्टडी के लिए दें और उनको कुछ असाइनमेंट्स दें ताकि दे बेसिकली लर्न अबाउट द कोर प्री रेक्विजिट्स. जब तक प्री रेक्विजिट नॉलेज उनके पास नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो आपकी जो है ना वो एक एडवांस लेवल की बात को समझ सकें. तो आई थिंक ये एक बड़ा टीचर्स के लिए, हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहा है कि जब कभी किसी भी ऑडियंस, इसीलिए क्योंकि हमेशा जो ट्रेनिंग जो कोर्सेज होते हैं ना वो बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की इसलिए सेपरेट किए जाते हैं कि आप एक ही सेशन में अगर सबको बिठा लेंगे तो कपल ऑफ देम विल गेट बोर्ड एंड कपल ऑफ देम विल बी लॉस्ट. तो ये दोनों सिचुएशन ना, बोर और लॉस्ट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. तो you basically need to design a course according to the basically audience. Thank you so much, sir. Okay.
We have 1 minute if any other question or. हाँ सर, अगर आप ये स्लाइड्स भी मेरे साथ शेयर कर देंगे तो ये भी मेरे लिए हेल्पफुल होगा, ताकि ट्रेनिंग में मैं इनके ऊपर भी इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसा कुछ है हमारे पास? जी। ओके, ये जो मेरे ऑर्गेनाइजर्स हैं, they have everything with them, so if they want to share, so they can. हाँ, थैंक यू सो मच अगर आप शेयर करें। थैंक यू। Okay, moderator, if you are with us, if any closing remarks from your side. Yes, I think that's it for the day. Thank you so much, guys, for joining us today. We have mentioned an email in the chat section. You guys can email us for the recording or any queries regarding our trainings at info@diceanalytics.pk. Software testing and quality assurance training is starting from 31st December. Thank you so much, Mr. Milal, for your time and for truly conducting such an informative, amazing session. Thank you. Thank you, all of you. Thank you. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz, everyone.